हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे इस सेशन पे। आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ, विद आंचल मैम, योर एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। तो आज के सेशन में हम करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है। सो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज गो माय डियर स्टूडेंट्स एंड download the application. After downloading the application, go and type my name on the search box, ANCHALSINGH, and hit the like button. And also hit the follow button. Now follow button profile पे जैसे ही आप hit करेंगे, आपको free live sessions, free PDFs, free recorded sessions, free doubt clearing session, free practice sessions, free mock test और साथ ही फ्री पीडीएफ्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे। बट इसके अलावा अगर आप मेरे पेड कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में और डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, रूटीन स्टडी करना चाहते हैं और एग्जाम डेफिनेटली क्रैक करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, बिल्कुल जुड़िएगा और जुड़े रहिए और तैयारी करिए और क्रैक करिए। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस कोर्स में जुड़ना है हमारे साथ, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन फीस ये सारी है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। प्लीज हैव अ लुक। बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, डेली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ्स है हमारे यहाँ पे और लाइव मॉक टेस्ट है। तो 1 मंथ की फीस कुछ 1300 है, 3 मंथ्स 3250, 6 मंथ्स 5200, 12 मंथ 6700, 24 मंथ 7800। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 मंथ्स फीस ले लेते हैं और एन लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिल जाता है इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, विच मीन्स देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ ₹650 एंड योर फीस बिकम्स 5950 रुपीज। बट इसके लिए आपको मेरा ये कोड एन लाइफ को यूज करना होगा। This is my schedule. Please have a look on the schedule. You can see my classes at Wi-Fi Study Studios from 6:30 to 7 a.m. on YouTube, 10 a.m. to 11 a.m. Monday to Wednesday. Unacademy Plus पे भी आप मेरी क्लासेस कर सकते हैं। 11:30 to 1:30 p.m. आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म स्पेशल क्लासेस में कर सकते हैं, जो है बिल्कुल फ्री सभी के लिए। यहाँ पे कोई भी चार्जेस अप्लाइड नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की डेफिनेटली जरूरत है, बट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 p.m. to 3 p.m. आप मेरे चैनल वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे भी जुड़ सकते हैं और 10:30 to 11 a.m. थर्सडे और फ्राइडे को वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। ओके, चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, we do need we do need to guard against unfair trade practices such as goods made in China being routed through some countries with which India has an FTA, flouting all rules of origin and local value addition norms. This is integral to the ongoing process of eliminating from Indian businesses assorted means of enrichment that have little to do with efficient creation of value. India can hope to end its present exclusion from global value chains across various industry segments through membership of RCEP. At the same time, the government needs to appreciate that global trade and exposure to import competition constitute a sure method of raising Indian industry's competitiveness. In parallel, there is the need to put in place clear-cut safeguards measures to prevent dumping of goods, especially from China. So we have 5 questions given over here, 5 sentences are here, and we have to rearrange the following sentence. Give sentences are not in their exact position, rearrange them to make a coherent paragraph, and then answer the following question. As I always say, and I will again tell you that first try to find the keywords, rearrange, and then we shall further move to answer the following questions given over here. What according to you will be the answer to the following question? Please answer the following question and rearrange quickly. Take your time, 2 minutes, 3 minutes, but rearrange properly, correctly, and by linking each and every keyword given over here.
आई होप मैंने जो भी सेंटेंसेस मार्क किए हैं आपको काफी हद तक समझ आ रहे होंगे और आपने रीअरेंज करना शुरू कर दिया होगा, राइट? So rearrange the following sentences quickly and we shall further move to the questions and answers part where there is answers given. What according to you should be the correct rearrangement of the following question? चलिए लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहला, which according to you is the fourth sentence after the rearrangement? You have few seconds to answer the following question. जल्दी से बताइए आपके अकॉर्डिंग फोर्थ सेंटेंस कौन सा है अरेंजमेंट में। जैसे ही आप मुझे बताएंगे मैं यहाँ पे मार्क करूंगी और डेफिनेटली आपको आंसर भी बताऊंगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी तक आपने कर लिया होगा, सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे जरूर जाके फॉलो कर लीजिएगा फॉर फ्री क्लासेस। Which of the following should be the fourth sentence after rearrangement? The correct answer is option number D. Option number D is the fourth sentence after the rearrangement. Next question. Which is the second sentence after the rearrangement? जल्दी से बताइए what should be the second sentence after rearrangement? D is eliminated क्योंकि fourth sentence हमने D मार्क कर लिया है, तो D के अलावा आपको बताना है which out of the following sentences is the second sentence after the rearrangement. The correct answer is option number E. Option number E is the second sentence after the rearrangement.
Which out of the following is the third sentence after the rearrangement? डी और ई हमने मार्क कर लिया है एज फोर्थ एंड सेकेंड. नाउ आपको बताना है ए बी सी में से थर्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बाद कौन से होंगे. कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे अपने आंसर्स बता सकते हैं. The correct answer, the second sentence is the third sentence is option number none other than option number A. Which is the first sentence of the rearrangement. Definitely we have eliminated these, so we are just left with two options, which is B and C. So which one do you think is the first sentence after the rearrangement? The first sentence after the rearrangement will be which of the following options? Yes, the sentence after the rearrangement would be option number none other than C. So the first sentence is option number C. Now we got to know what is the last sentence, option number B. Okay, so let's read it. India can hope to end its present exclusion from global value chains across various industry segments through membership of RCEP. In parallel, there's the need to put in place clear-cut safeguards measures to prevent dumping of goods, especially from China. We do not need to guard against unfair trade practices such as goods made in China being routed through some countries with which India has an FTA, flouting all rules of origin and local value addition norms. At the same time, the government needs to appreciate that global trade and exposure to import competition constitute a sure method of raising Indian industries' competitiveness. And the last but not the least, this is integral to the ongoing process of eliminating from businesses assorted means of enrichment that have little to do with efficient creation of value. So this is the correct answer of the following rearrangement. So let's move on to the next question. Next question, here we are. Rearrange the following five sentences A, B, C, D, E and proper sequence to form a meaningful paragraph and then answer the following questions. So we have five sentences here also, very easy to identify and arrange. The Indian Meteorological Department just issued a warning saying that the storm has turned very severe. Fani, a cyclonic storm brewing in the Bay of Bengal is set to hit India's eastern coast in the state of Odisha. Fani can even worsen into an extremely severe cyclone by tomorrow. Ministry of Home Affairs has ordered to release financial assistance in advance to four states that stand threatened by the natural disaster. This will prompt the government to put National Disaster Response Force and the Indian Coast Guard on high alert. So please rearrange, take your time and rearrange the following sentences. जल्दी से कीवर्ड्स को ढूंढिए, कीवर्ड्स को ढूंढ के उन ऑप्शंस को properly rearrange कीजिए and फिर बताइए what should be the correct rearrangement of the following question. You have got time, so please utilize your time and properly rearrange the following sentences.
क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कैसे एक के बाद एक सेंटेंसेस। कभी भी रीअरेंजमेंट में आप अगर सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि सेवन सेंटेंस आपके लॉजिकल सीक्वेंस में है ही नहीं। तो जब सेंटेंस आपके लॉजिकल सीक्वेंस में भी नहीं है, तो डेफिनेटली आप लॉजिकली उसको समझ भी नहीं पाएंगे, राइट? दिस इज द आइडिया बिहाइंड। सो इसीलिए पहले रीअरेंज किया जाता है और फिर समझ के पढ़ के समझने की कोशिश की जाती है कि करेक्टली अरेंजमेंट है, अरेंज किया हुआ है या फिर नहीं है। What will be the correct rearrangement of the following sentences? I hope आप लोगों ने अब तक rearrange कर लिया होगा। तो चलिए let's answer the following questions. सबसे पहले पूछा जा रहा है which out of the following sentences is the second sentence? So option number A says C, option number B says D, option number C says A, option number D says B, and option number E says E. So which of the following is the second sentence after the rearrangement? The correct answer is option number C, which says option number A. So the second sentence is option number A. Next, which out of the following is the fourth sentence after the rearrangement? A is already eliminated, so you have four options left: A, B, C, D, which says A says E, B says D, C says D, and D says C. Which out of the following is the fourth sentence after the rearrangement? The fourth sentence after the rearrangement is none other than option number A, which says option number E. Now the next question is option number which of the following is the first sentence, and I hope आप लोगों ने rearrange कर लिया है. The first sentence is option number A. Which of the following is the last sentence? The last sentence is option number D. And I hope आप लोगों के rearrangement भी बिल्कुल same होंगे as mine, and the middle sentence is same. Let's read it out first. Fani, a cyclonic storm brewing in the Bay of Bengal, is set to hit India's eastern coast in the state of Odisha. The Indian Meteorological Department just issued a warning saying that the storm has turned very severe. Fani can even worsen into an extremely severe cyclone by tomorrow. This will prompt the government to put the National Disaster Response Force and the Indian Coast Guard on high alert. Ministry of Home Affairs has ordered to release financial assistance in advance to 4 states that stand threatened by the natural disaster. These are the correct arrangement of the following question. Moving on to the next question. We have 6 sentences here which you need to rearrange. This traditional sector is the most globalized and fast globalizing. It is unable to use the interest subsidy given it to modernize. The budget has ignored three fronts. Textile is not to be regarded as a revenue yielding but an employment and extensive export intensive industry. It has to face full blown global competition from 2004. The subsidy is lapsing because an industry in losses cannot avail of it. Which out of the following options will be the correct answer to the given rearrangement? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have got 6 sentences here. You have to rearrange all the 6 sentences. We will directly rearrange these sentences. So jaldi se bataiye what should be the
correct rearrangement of the following sentence. What will be the correct rearrangement of the following sentences given over here in this question? So let's solve this question. आई होप आप सभी ने अभी तक रीअरेंज कर लिया होगा इन सेंटेंसेस को. So the first sentence is textile is not to be regarded as a revenue yielding but an employment and export intensive industry. Option number D comes first because यहाँ पे हमारा subject क्या हो रहा है, identify हो रहा है, subject introduce हो रहा है. Then this traditional sector, which sector? The textile sector. This traditional sector is the most globalized and fast globalizing industry, right? Then comes option number E, which says it has to face full blown global competition from 2004. Then comes option number B, it is unable to use interest subsidy given to it to modernize. Why? Because the subsidy is lapsing because an industry in losses cannot avail it. And the last, the budget has ignored three fronts. This is the correct arrangement of the following question given over here in this sentence. Let's match the answer. Second sentence is option number A, of course. Sixth sentence is option number C, of course, which is in B. Fourth sentence is option number B, of course. Third sentence is option number E, of course. And the first sentence is option number D, of course. So the correct arrangement was D, A, E, B, F, C, right? So this was all about today's session. We did a lot of rearrangement. I think we did 3 rearrangement of sentences and rearrangement sentences की सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी हमारी कुछ दिनों तक. तो जिन लोगों को भी rearrangement sentence में प्रॉब्लम है, जिन्हें सॉल्व करना है, स्ट्रैटेजी सीखनी है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें. ठीक है, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे. Do like, share, and subscribe the channel, and also like the session. See you guys in the next session in the next class. Till then, take care.